हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीडियो का टाइटल पढ़ के थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया ऑलरेडी लग गया होगा। ये वीडियो तुम मान के चल सकते हो कि छोटा सा एक शॉर्ट लाइफ अपडेट है। जितने भी लोग लिंक्डइन पे ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे मुझसे, आई ऑलरेडी पोस्टेड अबाउट दिस ऑन लिंक्डइन रिसेंटली। सो क्रक्स एंड शॉर्ट समरी ऑफ द होल वीडियो मैं तुम्हें शुरू में दे दूँ। सो ऑन 29th of January, I recently joined Microsoft as a L61 software engineer 2. Prior to this, अगर तुम ऑलरेडी चैनल को फॉलो करते आ रहे हो तो यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर कि फॉर मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years अप्रॉक्सीमेटली, अगर तुम लगाओ तो 2 years 6-7 months अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपना टाइम गूगल में स्पेंड किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट, इन गूगल आई वॉज वर्किंग विद गूगल पे एंड ट्रस्ट मी, आई came to know about a lot of things around the payment ecosystem of India. मैंने काफ़ी क्रेजी लोगों के साथ काम किया, काफ़ी हद तक चीज़ें रिमोटली थी एंड देन वी हैड टू गो इनटू द ऑफिस कल्चर देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई बिलीव माई टाइम एट गूगल वॉज रियली नाइस. ऑफ कोर्स इट बूस्टेड माई रिज्यूमे एज वेल एंड माई ओवरऑल लर्निंग. मतलब लास्ट 2.5 years में मैं अपनी जो एंज पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जो देखता हूँ उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई एंड आई फेल्ट लाइक थिंग्स आर रियली गुड. राइट, but of course you always need change. Recently matlab there were a lot of reorgs and everything, and I believe I kind of like wanted more like a work from home, or I would say more work from home oriented kind of a role. Right, so this was kind of like the main driving factor due to which I recently had a shift to Microsoft. राइट, माइक्रोसॉफ्ट में मेरा क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था, मतलब क्लासेस में या फिर फॉर एग्जांपल कमेंट्स में लिंक्डइन के या फिर पर्सनल डीएम्स में काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस क्या था. तो आई मे बी मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अराउंड इट, ऑल्दो तुम सेम प्रोसेस की डिटेल्स लीड कोड वगैरह पे फाइंड कर सकते हो, बट आई विल डेफिनेटली शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एंड मे बी हाउ डिड आई प्रिपेयर एंड एवरीथिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट. राइट, बट मोर और लेस ये एक छोटा सा लाइफ अपडेट देना था. आई विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिंग एड्स टीम. तो एड्स इकोसिस्टम, एडवर्टीजमेंट वाला इकोसिस्टम कैसे चलता है, हाउ सिस्टम्स वर्क देयर इज गोइंग to be something of my full focus. I believe for a good amount of time I will be contributing to the back end, and if let's say I have some good buffer time period, then I'll be able to contribute to the front end as well. I'm really excited for this phase of the life. I believe ki after 2.5 years there was a lot of learning that I got from Google, and I will be able to use that learning and get some more I would say growth opportunities here at Microsoft as well. As I mentioned, I am more inclined towards work from home kind of a scenario, and I believe कि Microsoft में I was able to get kind of that chance कि मैं मतलब more hybrid space में काम कर पाऊँ कि whenever I want, if you want to go to office and like things are relatively more chill. So I believe yes, that is what I wanted to share. मैं कोई I left Google वाली वीडियो बनाने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड था नहीं. आई डोंट फील लाइक कि उतना क्लिक बेट की ज़रूरत है एंड कोई रेवोल्यूशन ऐसा मैं कर नहीं रहा हूँ फिलहाल. आई वॉज डूइंग थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक शिपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड आई बिलीव कि आगे भी मेरे को इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ही ग्रो करना है. Right, so that's why I put the title also that I joined Microsoft. Right, so no clickbait or as such, it was just a quick life update, I would say. I felt like I owe a dedicated I would say video to all of the subscribers of the channel, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से सपोर्ट दिखाया है and you have been there consistently. तो any major life update if let's say it happens, so I believe it's a responsibility that I should come up and like update you guys. I'm really happy. I got a good number of comments around the fact that I joined Microsoft. A lot of people showed their love and respect and like support on LinkedIn as well. I hope you guys will do the same. काफ़ी interesting चीज़ें हम लोग algo camp पे भी कर रहे हैं. So if you want to check it out, do check the website, I would say. Right, but overall I believe next few years at Microsoft is going to be exciting. एक absolutely untouched space में मुझे काम करने को मिल रहा है and I believe the overall company culture and the team looks very I would say warm and like welcoming, so gives you kind of like a kick and slight I would say level of excitement. Right, so yeah, that was this video all about. We'll be posting some really new content and new awesome content this upcoming year, so stay tuned for that. अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो and you wish to support the channel overall, so do hit the like button and do subscribe to the channel. It is going to support us and motivate us to bring more content. And
I would say keep a kind of like a touch with all of you guys. And again, thanks for all of your support. And I really look forward working here. I will definitely share my experiences, that how do I like and what new things I'm learning. Of course, कुछ बहुत ज़्यादा internal I cannot share. But yeah, I'll be posting some cool updates coming up ahead. That being said, इस वीडियो को यहीं पे wrap up करते हैं. हम लोग मिलेंगे next set of videos में. Till then, take care guys. Bye bye. I am Sanket Singh, signing off.